Hello students, welcome to a new chapter in organic chemistry, that is biomolecules. More precisely, this biomolecules belongs to a branch of biochemistry. So let us first try to understand what is the meaning of biomolecules. So biomolecules are the lifeless complex molecules which actually produced by a cell or a living organism, you can say. Now, the basic unit of any living organism is a cell. The cell sustain, cell grows, multiply, and for all these purposes, we require a basic lifeless molecules like proteins, like carbohydrate, like vitamins, like nucleic acids, that is DNA, RNA, lipids, fats. So all these are nothing but essential components which are required for a particular living organism or a cell to grow, sustain, and also to carry out a biological functions. So that are biomolecules. So biomolecules are basically those lifeless complex molecules which combines in a specific manner to have a proper functioning, biological functioning of any living organisms. So now in this chapter, basically we are not going to discuss more about the functionings of these molecules, but in chemistry, we are going to discuss more about their structures and type, their functionings, and the detailed idea you will get it in biology. But in chemistry, we are more concerned with respect to their structure, their forms, and their type. So let us now begin with a chapter with the first biomolecule, that is carbohydrates. So let's talk about carbohydrates, the first lifeless molecule, biomolecule. Okay, so we'll start with carbohydrates, which are commonly called as carbs, a good source of energy, a quick source of energy, that is carbohydrates. So now what are carbohydrates? Now, can you see the name carbohydrates? And I'll discuss both the definition, the earlier primitive definition of carbohydrate and the new modern definition of carbohydrates. So let's talk about that. So earlier, the name itself gives you an idea that if you break this word into two parts, it starts with carbo, which means carbon, ends with hydrates, which means water. So earlier it was a belief that carbohydrates are those lifeless molecules which have water associated with them. Okay, water associated with them, therefore they are called as carbohydrate. For example, the simplest carbohydrate can be written as glucose, C6H12O6. And if you talk about this glucose can also be written as C6H2O6 time. Therefore, if you talk about the representation of carbohydrate, the carbohydrates are always represented CXH2OY. Okay, so this was the earlier definition, the primitive definition of carbohydrates, that these are nothing but those lifeless molecules which have water associated with them. Therefore, they are called as carbohydrates, a very good source of energy. But later on, as the research developed, we found out that this is not the correct definition of carbohydrates. So what is the correct definition of carbohydrates? For that, we need to analyze the structure of glucose. So let's analyze the structure of glucose. So if you talk about a glucose has 6 carbon atom in it. Okay, the first carbon atom is actually a part of aldehyde group, CHO. The second carbon atom has one OH group and H group. Third carbon atom has again a OH group at the left hand side and H group. Fourth carbon atom, OH and H. Fifth carbon atom is again associated with the hydroxy group and H. And a sixth carbon atom is actually a primary alcohol of CH2OH. So if you see properly, they have this glucose molecule, one single glucose molecule have one aldehyde group, and they have 5 hydroxy group, out of which 4 are secondary alcohol. If you see, CHOH is actually a secondary alcohol and CH2H is a primary alcohol. So they have a hydroxy group associated. So we can say they are
polyhydroxy. And if you see properly, this carbon atom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you see the second carbon atom, third carbon atom, fourth carbon, fifth carbon, this 4 carbons from carbon number 2 till carbon number 5, they are all chiral carbon atom. Chiral carbon, a carbon attached to 4 different group, which leads to optical activity. If you remember from the concept of optical active substance, which are those substances which can rotate the plane of plane polarized light either to right hand side or to the left hand side, that is dextrorotatory or levorotatory. And how to identify them? They should not have plane of symmetry. They should not have a mesoform, that is a half form, that is again a plane of symmetry. Okay, then their mirror image should be a non-superimposable, which we have done in optical activity, plus the chiral carbon atom in case of organic. And what is chiral carbon atom? A carbon attached to 4 different groups. So if you can see properly, this carbon is attached to one CHO, one OH group, one H group, and again a large group. So again, if you see, even this carbon atom is attached to 4 different groups, even this carbon to 4 different. So there are totally 4 chiral carbon atom associated with it. So glucose is basically a optical active substance which can rotate the plane of plane polarized light. You have done this in halogen derivative of alkane, plus already you have done this in isomerism concept, that is stereoisomerism. So glucose is having aldehyde group, having hydroxy group, and they are optically active substance. Similarly, if you talk about fructose and glucose have same molecular formula, C6H12O6. But if you see the structure of fructose has first carbon atom with CH2OH. Second carbon is a ketonic group. Third carbon, if you talk about a third carbon atom, which has one carbon, OH and H. Fourth carbon is again COH, fifth carbon again COH, and sixth carbon is again CH2OH. So if you see properly, it has a ketonic group, again hydroxy, plus carbon number 3, carbon number 4, and carbon number 5 are chiral carbon. So again, fructose is an optically active substance which have a ketonic group, and glucose is an optically active substance which have an aldehyde group, and both of them are polyhydroxy. So if you see their structure, we can have a new definition of carbohydrates. So according to the modern science, the new definition of carbohydrates are that carbohydrates, carbs basically are polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketones, which are optically active in nature. So the earlier definition was discarded, that carbohydrates are those compounds which consist water. Why? Because when you heat them, you don't get a free water molecule. Secondly, if you see this formula, this is the formula framed from the carbohydrate. Okay, so there are many substances which are not carbohydrate at all, but they can be fit into this formula. For example, you talk about this compound HCHO. HCHO is called as formaldehyde. It's an aldehyde, formaldehyde, the first aldehyde. Now, formaldehyde ka formula I can write it as C1H2O1. Dekho. If you see properly, formaldehyde is not a carbohydrate, but it can represent by this formula CXH2O, where you put X as 1, Y as 1. Acidic acid, it's very familiar example, CH3COH, acidic acid. Acidic acid can be represented as C2H2O twice. See, so if you see properly, acidic acid is not a carbohydrate, but it can be represented by this formula. So there are many substances which are not carbohydrate, but can be represented by the formula of CXH2OY. Okay, and there are many carbohydrates which are by nature carbohydrates, but they are not represented by this formula. For example, if I say rhamnose,
Rhamnose has a molecular formula C6H12O5. देखो इसको आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते इस फॉर्मूले में. And rhamnose is a carbohydrate. Now, if you talk about deoxyribose, and I did your deoxyribose. Now, deoxyribose is a carbohydrate, but it has a molecular formula of C5H10O4, which cannot be represented by this formula again. You talk about many other substances which are not which are carbohydrate but cannot be represented by this formula, and there are many substances which are not carbohydrate but they can be represented by the formula, and by heating them you don't get a free water molecule. So therefore the old definition of carbohydrate is discarded, but they have kept the name because thought process is more important. So the carbohydrate name is kept as it is. But if you think that carbohydrates are those compounds which have free water molecules in them, so that is absolutely wrong. But the new definition, you have to believe in new definition according to the structures of glucose and fructose, that carbohydrates are those lifeless molecules which are either polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketones and optically active in nature. Okay, so these are the actual definition of carbohydrates: polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketones which are optically active in nature. Okay, and you know the meaning of optically active substance: consisting of no plane of symmetry, mirror image or superimposable, non-superimposable, and third, they have a chiral carbon atom, that is carbon attached to 4 different groups, and these substances can rotate the plane of plane polarized either to right hand side, which are represented by small d or plus sign, that is dextrorotatory, or can rotate the plane of plane polarized light to left hand side, called as levorotatory or minus L. So you have done this about dextro and levo in stereochemistry, in case of a stereoisomers. Okay, so this is the basic definition of carbohydrates. Now let's move ahead and move on to the next part of the carbohydrates. And before starting with the next part of the carbohydrates, I'll clear this up. We'll first discuss little bit of basics. तो बेसिक्स में सबसे पहला पार्ट सब्सटेंस आप लोगों को पता है कि if I talk about some basic idea, the first thing is how to write a molecule in, ये भी आप लोगों को पता है from isomerism, Fischer projection formula. So how to represent the optically active substance with respect to Fischer projection formula. So let us consider an optically active substance, lactic acid. Lactic acid. We know that I'm taking this familiar example which we have done in stereoisomers of optical activity. So lactic acid is basically a carbon attached to H, attached to COH, attached to OH, attached to CH3. 2-hydroxypropionic acid is lactic acid. This carbon atom is a chiral carbon atom attached to 4 different groups, optically active substance. So how will you represent any optically active substance consisting of a chiral carbon atom with respect to a Fischer projection formula? So according to Fischer projection formula, a tetrahedral carbon, this carbon atom, which is sp3 hybridized and chiral carbon as well as tetrahedral in nature, is represented by 2 cross line. 2 cross line से आप इसको represent कर सकते हैं. Okay, one is the horizontal line which is coming out of the page, ऐसा बाहर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है. Okay, and one is a vertical line which is going inside the plane. Okay, the horizontal line, vertical line going inside the plane. So the point of intersection of these 2 lines represents the chiral carbon atom. This is the chiral carbon atom. Now it has 4 groups, if you can see properly: COH, OH, CH3H. तो suppose COH मैं यहाँ लिख देता हूँ. Okay, यहाँ पर मैं OH लिख देता हूँ, suppose यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3 and I'm here and writing down H. So this is how you represent, and this carbon is nothing but the chiral carbon atom, the asymmetric carbon atom. Okay, so this is your chiral carbon atom. So this is how you represent any optically active substance with respect to Fischer projection formula. Now, if it rotates the plane of plane polarized to right hand side, then it becomes the dextro isomer, that is represented by small d, yeah, plus sign. Or if it rotates the plane of plane polarized light to left hand side, plane
पोलराइज लाइट का प्लेन अगर ये लेफ्ट पे टर्न कर देगा टू माइनस डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड मतलब माइनस डिग्री में आएगा, देन इट इज कॉल्ड एज लेवो रोटेटरी। तो इसको हम लोग स्मॉल एल और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, डिपेंड अपॉन द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब इसके थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट पास होती है, उसका एक एंगल रोटेट हो जाता है। अगर वो राइट पे रोटेट हो गया तो मतलब वो मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड है, अगर वो लेफ्ट पे रोटेट हुआ मतलब वो मॉलिक्यूल लेवो lactic acid, which you have done in stereoisomers. Okay, with respect to this, and their mirror image is always non superimposable, मतलब अगर मैं इसका भी mirror image यहाँ पर आपको बना के दिखा दूं, so it becomes a non superimposable mirror image. These are basics यार, जिन लोगों को ये basics आता है, you can skip to this part. So if you make a mirror here, उसका mirror image ऐसा बनेगा, देखो OH के सामने OH, then you have this HOOC, here you have what, H3C, and then here have H. Now अगर मैं इसको उठा के इस पे रख दूंगा तो OH कोइंसाइड करेगा H पे, H कोइंसाइड करेगा OH पे, so it is a non super imposable mirror image. Suppose ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है तो ये उसका लेवो फॉर्म हो जाएगा, और इन दोनों को हम लोग शॉर्ट में enantiomers कहते हैं, if you remember. So enantiomers are nothing but the dextro and levo of the same form which are non superimposable mirror image. जैसा ये हैंड है, इसके सामने मिरर रखा तो ये इसका इमेज आएगा। अब ये इमेज को उठा के इस पे रखूंगा तो थंब से थंब, इंडेक्स इंडेक्स नहीं मिल रहा है, मतलब नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके, so this is optically active का condition, and this is how you represent a molecule in Fisher projection formula. Now second point you need to remember as basics is capital D and capital L notation. Now what is this capital D and capital L notation? Now this D and L represent the configuration, or in simple terms they represent position of OH on last chiral carbon. Okay, position of OH group on the last chiral carbon. Capital D and capital has nothing to do with small d and small l, because small d small l is from optical active substance. Capital D and capital L represents the position of OH on chiral carbon atom. Okay, वो भी last chiral carbon atom. For example, if I take the simplest carbohydrate, simplest carb, example glyceraldehyde. This is glyceraldehyde. Okay, the formula of glyceraldehyde, if you represent the glyceraldehyde, so it has one carbon atom attached to a CHO group, attached to OH, attached to H, and attached to CH2OH. Okay, this is a glyceraldehyde. So if I represent a glyceraldehyde, now if you see properly, this is the one of the chiral carbon. It has only one chiral carbon atom, so this is the last chiral carbon atom. The second last carbon is the last chiral carbon atom. Remember, in any carbohydrate, whether it is ketosis containing a keto group, whether it is aldosis containing a aldehyde group, चाहे वो ग्लूकोज के जैसा हो, फ्रक्टोज की फैमिली में हो, कुछ भी हो, जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है, याद रखना, that becomes the last chiral carbon atom, क्योंकि इसके नीचे ये कार्बन जो लास्ट कार्बन है वो chiral नहीं है. The second last carbon is the chiral carbon atom, so it becomes the last chiral carbon atom. So if you see this last chiral carbon atom in the group, the OH, अगर मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि this is the chiral carbon atom here, here is a OH, here is CHO, here is H, here is CH2OH. Now here on the last chiral carbon atom, the OH is present at the right hand side, so this becomes the D form. And suppose ये molecule dextrorotatory है, so it is D plus glyceraldehyde. Now if I represent it in this form, OH, CHO, H, CH2OH, so it becomes L minus glyceraldehyde, because here the OH is present at left hand side on the last chiral carbon atom. So this capital L and capital D is associated with the position of OH on the last chiral carbon atom.
It has nothing to do with dextro and levo. This capital D can be dextro, can be levo. जैसे इस एग्जाम्पल में ये dextro है, यहाँ पर ये लेवो है, लेकिन अगर सपोज मैंने एग्जांपल लिया फ्रक्टोस का, सपोज फ्रक्टोस लिया, सो फ्रक्टोस मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रक्टोस इज C6 फ्रक्टोस इज C6H12O6। अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाया था फ्रक्टोस का, तो उसको मैं फिशर में बना के बताता हूँ। द फर्स्ट कार्बन एटम इज CH2OH, the second carbon is C double bond O. Now the third carbon is chiral, fourth is chiral, fifth is chiral, and sixth is again CH2OH. So all chiral is represented by cross lines, horizontal and vertical. Now on the third carbon atom, the OH is at the left hand side. Keep this in mind. H is on the right hand side. The fourth carbon atom, OH is at the right hand side. H left में है. The fifth carbon atom, OH is right hand side. H left में है. Now third carbon is chiral, fourth is chiral, fifth is chiral. But which is a last chiral? The fifth one is the last chiral carbon atom, which is actually the second last chiral of the entire molecule. So this is the last chiral. Here the OH is placed at right hand side. And also the naturally occurring fructose is levorotatory. So now this becomes D because of the position of OH, minus because by nature it is levorotatory fructose. Okay. Now if I make another molecule, another structure of fructose like this, CH2OH, C double bond O, C properly, third, fourth, fifth, sixth carbon is CH2OH. See, I'm placing OH here, H same, okay, OH, sorry. First carbon, second carbon, third, fourth carbon में OH right पे, H, fifth carbon पे OH देखो मैं कहाँ डाल रहा हूँ, left and H here. So these are three chiral carbon atom, and the fifth one is the second last chiral element where the OH is placed at the left hand side. So this is L. Now by nature it is dextrorotatory, so L plus fructose. So the D form can be dextro, D form can be levo, L form can be levo, L form can be dextro, because this capital D and capital L has nothing to do with the optical rotation. It is all about the position of OH on the last chiral carbon atom, which is actually the second last carbon of the entire molecule. Okay. So we understood how to write a molecule in Fisher projection formula. We understood what is optical activity from the stereoisomers, and also what is capital D and capital L. That is the location, position of OH on the second last chiral carbon atom. So this is the basic idea. Now we can go in detail of carbohydrates. As you have understood that carbohydrates are nothing but those lifeless molecules which are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone, and plus they are optically active in nature. So now let us try to classify them. So I'll classify a carbohydrate here. Focus on the classification. So if I talk about the classification of carbohydrates, so carbohydrates are classified in two types. The first type is called as simple carbohydrates, or also called as monosaccharides. Saccharide stands for the sugar. Carbohydrates को normally sugar कहा जाता है in simple terms, in common terms. So simple or monosaccharides, or they are called as, the second classification is complex. Okay. So what is a simple carbohydrates and what are complex carbohydrates? Simple carbohydrates are those carbohydrates which cannot be broken further. Okay. They cannot be hydrolyzed further. आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्म, सिंपल फॉर्म में होते हैं। इसके लिए उनको हाइड्रोलिसिस में नहीं डाल सकते। हाइड्रोलिसिस मतलब breaking of any substance with the help of water. So they are called as what? Simple carbohydrates.
So guys, simple carbohydrates are those which cannot be broken further, which cannot be hydrolyzed. They are in the simple form. But what are complex carbohydrates? So complex carbohydrates are a polymeric chain. Okay, they are made up of small single carbohydrates. They can be broken down into simple form. So complex carbohydrates are those which can be hydrolyzed to yield simple form, that is monosaccharides. इसके लिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं. सैकेराइड्स मीन शुगर, मोनो मीन सिंगल, सो इट्स अ सिंगल शुगर. एंड कॉम्प्लेक्स मतलब इट्स अ चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल फॉर्म. बट सिंपल को आप ब्रोक नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसके लिए उनको मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है. तो सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स, दे कैन नॉट बी फर्दर, you have to remember, they cannot be further hydrolyzed. You cannot hydrolyze them. They are sugar and crystalline, so we can write down cannot be further hydrolyzed. Okay, they are simple sugar, crystalline, water soluble, sweet and soluble in water, sweet and water soluble normally. Okay, and they are represented by a general formula of CnH2nOn. Simple carbohydrates. Now complex carbohydrates are those which can be further broken down, so they can be hydrolyzed into simple form, that is into monosaccharides, simple sugar. अब कॉम्प्लेक्स, अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे कि सिंपल शुगर को हम लोग और दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. दे कैन बी क्लासिफाई एज एल्डोसिस, मतलब हैविंग अ अल्डिहाइडिक ग्रुप, एंड कीटोसिस, हैविंग अ कीटो ग्रुप, दैट इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप. तो जिसमें सिर्फ C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रक्टोज, तो वो कीटोसिस में आ जाएगा. एल्डोसिस मतलब जिसमें सिर्फ अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा. अच्छा, कॉम्प्लेक्स को आप कैसा क्लासिफाई कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कैन बी क्लासिफाई एज ऑलिगो सैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स. ऑलिगोसैकराइड्स का मतलब क्या होता है? ऑलिगोसैकराइड्स आर दोज which when broken down gives 2 to 10 monosaccharides, and polysaccharides which when broken down gives more than 10 saccharides molecules. मतलब for example sucrose, cane sugar is made up of two simple monosaccharides, glucose and fructose. तो जब केन शुगर को हम लोग ब्रेक करते हैं, केन शुगर को सुक्रोस कहा जाता है. सुक्रोस को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमको दो मोनोसैकराइड्स मिलते हैं, ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस. इसके लिए केन शुगर ओलिगोसैकराइड्स हो गया. लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्टार्च की. स्टार्च विच यू गेट इन राइस, विच यू गेट इन पोटैटोज, जब आप वो कंज्यूम करते हैं तो इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोस. तो जब आप उसको ब्रेक करते हो, यू गेट अ लार्ज ग्लूकोस मॉलिक्यूल. बहुत सारे ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स उसमें एक चेन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको हम लोग पॉलीसैकराइड्स बोलते हैं. सो ऑलिगोसैकराइड्स आर दोस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स which when broken down gives 2 to 10 monosaccharides. इसके लिए ऑलिगोसैकराइड्स को डायसैकराइड्स बोलते हैं अगर वो दो मोनोसैकराइड्स में ब्रेक हो रहा है. ट्राइसैकराइड्स कहा जाता है अगर वो तीन में ब्रेक हो रहा है. टेट्रासैकराइड्स, पेंटासैकराइड एंड सो ऑन. बट पॉलीसैकराइड्स किनको कहा जाता है? which gives more than 10 monosaccharides. Okay, like starch, gum, gelatin, dextrin, cellulose, ये सब पॉलीसैकराइड्स होते हैं which give more than 10 saccharides. Okay, more than 10 सिंपल शुगर से बने होते हैं एक मॉलिक्यूल. सो अब मैं इसको आगे आपकी एग्जांपल्स देता हूं. गिव यू एग्जांपल्स फर्स्ट फॉर सिंपल शुगर, एल्डोसिस, कीटोसिस, and then we'll move on to oligosaccharides and polysaccharides. So keep this classification in your mind. Okay, ये क्लासिफिकेशन अपने दिमाग में रखना. हम लोग यहाँ तक पहुंच गए. So we'll do that. Okay, so first I'll clear this up. You keep this in your mind.
Okay, so now let us try to classify them. So I need this page. Okay, so सबसे पहले मैं बात कर रहा था सिंपल की, तो सिंपल के अंदर we have aldoses. Okay, so let's talk about simple carbohydrates which are called as monosaccharides. They are classified as aldoses and ketoses. तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा सिंपल मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला हमने देखा था CnH2nOn. तो फर्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट aldoses. Now what are aldoses? Aldoses are those simple monosaccharides which have CHO as their main functional group, the aldehydic group. Okay, अब aldoses में अगर मैं बात करूं तो कौन से फॉर्म हम लोग डिस्कस कर सकते हैं aldoses के अंदर. So let's talk about that. So first thing, suppose मैंने बात करी है aldoses में about the first molecule aldotriose. Now what is aldotriose? Aldotriose means it will be having a 3 carbon. So यहाँ पर N उनका 3 होगा, इसके लिए इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इनका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा C3H6N3 होगा ना, NO3. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं उसका एग्जाम्पल में, सो D अल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड. सो D, सब D फॉर्म ही दिखा रहा हूं मैं आपको. कैपिटल D का मतलब समझ गए आप, OH किधर पे होगा? राइट हैंड साइड. किधर? लास्ट कायरल कार्बन एटम पे. मैं सब आपको D फॉर्म दिखाऊंगा, तो उनके L फॉर्म भी हो जाएंगे. कैपिटल L में सिर्फ OH को आपको कहां रखना है? लेफ्ट हैंड साइड में रखना है. ओके, तो मैं यहाँ पर सबके D फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ. डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. सो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का मैंने आपको बताया था कि इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसा दिखेगा? ऐसा दिखाई देगा आपको. OH, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा CHO, और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH. So see properly on the second last on the carbon which is a chiral carbon atom, you have this OH on the right hand side. इसके लिए D फॉर्म है और फॉर्मूले के हिसाब से इट इज अ ग्लिसरॉल्डिहाइड. तो ये एल्डोट्रायोस हो गया जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं. सिमिलरली वी कैन हैव व्हाट, यहाँ पर एल्डोटेट्रोस. सब एल्डोटेट्रोस में 4 कार्बन, मतलब C4H8O4. तो अब इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, सो एल्डोटेट्रोस में कितने फॉर्म होते हैं? तो एल्डोटेट्रोस में एक होता है एग्जाम्पल में डी एरिथ्रोस. डी एरिथ्रोस, और डी एरिथ्रोस कैसा दिखाई देगा? देखो, इट इज लाइक दिस. CHO, OH, H on the second carbon which is chiral, third carbon OH, H, देखो राइट पे है OH, and your CH2OH. so डी एरिथ्रोस है. वैसे ही C4 का एक और एक मॉलिक्यूल है डी थ्रेओस. सो डी थ्रेओस कैसा दिखाई देगा? CHO, molecular formula, for second carbon which is a chiral, OH, H, D फॉर्म है इसके लिए OH, H and CH2OH. तो ये डी थ्रेओस एरिथ्रोस हो गया, डी थ्रेओस हो गया. दो both has aldehydic group, both has C4, therefore they are aldotetrose carbohydrates. Now why I am drawing this structure to convey one point. क्या इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है? नहीं है. ओके, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर किसका याद रखना है? कीप दिस इन माइंड. ग्लूकोस, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस एंड डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. ग्लूकोस वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रक्टोस वेरी इंपॉर्टेंट, गैलेक्टोस वेरी इंपॉर्टेंट, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. बाकी किसी का भी स्ट्रक्चर बताने का आपको जरूरत नहीं है. ओके, व्हाई आई एम शोइंग दिस स्ट्रक्चर? टू कन्वे वन सिंपल पॉइंट. If you see properly, D-erythrose and D-threose, both of them they have two different names. एक erythrose एक threose है, but दोनों का molecular formula same, number of chiral carbon atoms दोनों में same, दोनों D form है. but अगर मैं यहाँ पर mirror रख दूं बीच में, so they are not mirror image of each other. See देखो, OH के सामने OH आ रहा है, but in front of OH there is a H, so they are not mirror image of each other. So those molecules, remember, those molecules which have same molecular formula, they have same molecular formula, ठीक है, same functional group, okay, same number of chiral carbon
but not mirror image, but not mirror image, उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। अगर मिरर इमेज हो जाती तो वो इनएंशियोमर हो जाते, डेक्स्ट्रोलेवो। तो जो मिरर इमेज नहीं होते बट जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, कायरल कार्बन एटम सेम होता है, बट मिरर इमेज नहीं होते, दे आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स। रिमेंबर दिस पॉइंट। क्या इसका स्ट्रक्चर जरूरी है? नहीं, मैंने बस ये डायस्टीरियोमर्स पॉइंट कन्वे करने के लिए आपको बताया था। यू जस्ट नीड टू लर्न और यू जस्ट नीड टू रीड द एग्जांपल्स के विच बिलोंग्स टू विच क्लास। सो मैं स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। You don't require this. Just remember D-erythros, D-threos are aldotetros. But याद रखना they are not enantiomers. Enantiomers एक ही मॉलिक्यूल के दो फॉर्म होते हैं, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है बट इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ chiral carbon atoms सेम है, बट दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स। ओके, सो aldotetros has two examples जो मैंने बता दिया. Then we can have the third one, that is aldopentose. Aldopentose will be having C5 H10 O5. इसमें एग्जाम्पल कौन से एल्डोपेंटोस में? डी राइबोस, जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए में दिखता है, आरएनए में दिखता है, डी राइबोस। दूसरा डी लाइजोस, थर्ड डी आर्बिनोस, एल फॉर्म में लिख सकते हैं, डी फॉर्म भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है। फोर्थ जाइलोस। ये सब आते हैं एल्डोपेंटोस में। देन फोर्थ वन क्लासिफिकेशन में वी हैव एल्डो एक्सोस। सो गाइस एल्डो एक्सोस में दो एग्जांपल याद रखना, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस। सो सबसे पहला एग्जांपल में दे देता हूँ, इसमें नाम लिख देता हूँ जो जो है इसमें। डी एलोस, देन डी एल्ट्रोस, एल भी फॉर्म हो सकता है, देन यू हैव डी ग्लोस, then fourth one D mannose, fifth one D idose, sixth one D talose. Now seventh one D glucose. Remembers now aldohexose has a formula of what? C6H12O6. so ये सबके फॉर्मूला C6H12O6, सिर्फ OH की पोजीशनिंग अलग होगी। हमको कौन सा स्ट्रक्चर याद रखना है? डी ग्लूकोस, डी गैलेक्टोस, ओपन स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोस कैसा दिखता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ग्लूकोस का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, मैं फिर से स्ट्रक्चर बता देता हूं। कीप दिस इन माइंड के हाउ डी ग्लूकोस लुक्स लाइक। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सो 6 कार्बन 1, फर्स्ट कार्बन इज CHO, then you have this second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, and sixth carbon is CH2OH. First, second, third, fourth, fifth, and sixth. On second carbon, OH is at the right hand side, H left पे आता है। Third carbon पे, keep this in mind, third carbon पे OH आता है left पे, H आता है right पे। Then fourth carbon same as second, fifth carbon same as second, सारे OH right पर है, only at the third carbon the OH is at the left hand side. So this is the structure of open structure of D-glucose, जिसमें if you see properly there are 1 2 3 4 chiral carbon atoms. Okay, remember this structure, very important, D-glucose. Similarly you have to remember D galactose. Okay, milk में मिलता है लैक्टोस से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस। सो गैलेक्टोस अगेन फर्स्ट कार्बन एटम देखो सेम CHO, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कार्बन is CH2OH. Now on the second carbon atom OH is at the right, H is left. देखो सेम ग्लूकोज जैसा है सेकेंड कार्बन। थर्ड कार्बन OH left, H right, same glucose जैसा, but fourth carbon exception है, OH left, H right, fifth is again same.
So in case of galactose, on third and fourth carbon, OH is at the left hand side. In case of D-glucose, only at the third carbon, the OH at the left hand side. See the difference between glucose and galactose. Very, very important. दोनों भी structures. So ये दोनों structures आपको आने चाहिए exams के लिए. Okay. So D-glucose and D-galactose belongs to aldohexoses. तो aldohexoses को belong करते हैं और इनके structures याद रखना जरूरी है. The only difference is the third and fourth carbon atom. Okay. So this was all about aldohexoses. Now let us talk about aldoketosis. So B is ketosis. Okay. Again the same formula CN H2NON because it belongs to simple sugar. अब इसके अंदर भी हम लोग क्या ले सकते हैं? सबसे पहले कीटोसिस के अंदर we talk about ketotriose. Ketotriose formula will be C3H6O3. Example you need to remember dihydroxyacetone. Dihydroxyacetone. Ketotriose structure not required. Second, ketotetrose. So ketotetrose is C4H8O4. Example क्या याद रखना है इसमें? Remember one example. D erythrulose. Erythrose नहीं, erythrose triose वो एल्डो टेट्रोस में आते हैं. एल्डो एल्डिहाइड ये कीटोटेट्रोस है तो एरिथ्रुलोस. देन थर्ड कीटोपेंटोस. नाउ कीटोपेंटोस इज C5H10O5. क्या एग्जांपल याद रखना है? मतलब एग्जांपल्स जस्ट टू कीप माइंड. डी राइबुलोस, वहां पर डी राइबोस आता है, यहाँ पर डी राइबुलोस आता है. देन डी ज़ाइलुलोस, वहां पर डी ज़ाइलोस आता है, यहाँ ज़ाइलुलोस आता है. ओके, दो एग्जांपल ही है. अच्छा, फोर्थ कीटोहेक्सोस. सो कीटोहेक्सोस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा स्ट्रक्चर याद रखना? फ्रक्टोज का. तो एग्जांपल कौन से? डी टैगेटोस. डी फॉर्म ही सबके लिख रहा हूँ, एल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं. टैगेटोस हो गया. देन सबोस. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डी fructose. So remember the structure of the fructose. Or fructose, first carbon of the fructose is CH2OH, primary alcohol. The second carbon is C double bond O, ketonic. Now third, fourth and fifth carbon, sixth is CH2OH. So third carbon, fourth carbon, fifth is sixth. Third carbon OH left, H right. Fourth carbon OH right, H left. Fifth carbon OH right, H left. देखो इसका भी थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट पे आता है लाइक ग्लूकोज, बट सेकंड कार्बन इज कीटोनिक. वहां पर सेकंड कार्बन इज OHH, सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे कीटोन है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज. देखो सेकंड लास्ट कायरल सी, वन कायरल, सेकंड कायरल, थर्ड कायरल. वहां पर चार कायरल है ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में यहाँ पर तीन कायरल है. एंड द लास्ट कायरल कार्बन एटम व्हिच इज द फिफ्थ कार्बन हैज OH ऑन द राइट हैंड साइड. इसके लिए डी फॉर्म हो गया. सो दिस इज डी फ्रक्टोज. ओके, रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी किसी का स्ट्रक्चर याद रखने का जरूरत नहीं है हमको. So you don't need to remember all structures. You just need to remember the structure of what? Glucose, galactose, fructose. Okay, remember this structure. Very, very, very important. Now let us talk about. Let's move on to the next part. We'll take some examples of simple sugar. Simple sugar के हम लोग example लेंगे ग्लूकोज, जिसको डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. फ्रक्टोज को डिस्कस करेंगे, फिर ओलिगोसैकेराइड्स में चले जाएंगे. ओके, तो अभी ये मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दी कि व्हाट इज सिंपल शुगर. कॉम्प्लेक्स शुगर में मैंने आपको बताया था. I'll clear this up. If you remember, complex sugar which cannot be hydrolyzed, which can be hydrolyzed into small form. मैंने आपको बताया था कि उसमें कौन से फॉर्म होते हैं. तो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. हम कॉम्प्लेक्स शुगर को डिवाइड कर सकते हैं एज ओलिगोसैकेराइड्स
where it can be hydrolyzed to give 2 to 10 monosaccharides. And next is the polysaccharides. Okay, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए. I need some space here. Polysaccharides. Okay. So what are oligosaccharides? Oligosaccharides can be hydrolyzed to give 2 to 10 monosaccharides. I'll write it down here. Hydrolyzed to give 2 to 10 monosaccharides. Okay. Here it gives, on hydrolysis, gives large number of monosaccharides. Okay. Large number of monosaccharides. एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? एग्जाम्पल हो गया स्टार्च, एग्जाम्पल सेलुलोस, एग्जाम्पल डेक्स्टिन, गम्स, hemi, cellulose, etc. They have a long chain of monosaccharides and they can be further hydrolyzed to give large number. But oligosaccharides, they hydrolyze to give 2 to 10 monosaccharides. Okay. For example, remember this. For example, if I take an example of disaccharides. Now, what are disaccharides? Which gives 2 monosaccharides. जैसे disaccharides में हम लोग example ले सकते हैं sucrose. Sucrose. Now disaccharides has a formula of what? C12H22O11. Sucrose का formula है C12H22O11. इसमें hydrolysis करो, water add करो means, so it will give you 2 things, that is glucose plus fructose. So sucrose hydrolyzed to give glucose fructose. Maltose, malt sugar. वाटर डाल के इसको ब्रेक किया माल्टोस को, सो इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. मिल्क शुगर, लैक्टोस, जो मिल्क में मिलता है, मिल्क शुगर, इसमें वाटर ऐड किया तो इट गिव्स ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस. रिमेंबर दीज एग्जांपल्स फॉर MCQs and as well as we need to draw their structures later, so remember these examples. Now these are disaccharides. If you talk about trisaccharides, example of trisaccharides, raffinose. Remember, raffinose are those which you add water for hydrolysis. It gives glucose, fructose plus galactose. So 3 monosaccharides मिलेंगे. Okay. Tetrasaccharides का आपको example देता हूँ. Tetrasaccharides. Example of tetrasaccharides, stachyose. Now stachyose में अगर हम लोग ने water add किया तो it gives what? It gives glucose, fructose plus 2 molecules of galactose. So these are the examples of oligosaccharides, disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides. इतना भी याद रखा तो that is more than enough. Okay, and what are polysaccharides? Which gives large number of monosaccharides. So these are called as polysaccharides, जो बहुत ज़्यादा monosaccharides देते हैं. Okay, so this is the entire. So guys, this is the entire classification of carbohydrate, introduction of carbohydrates. Now we will try to understand more about the structure of simple sugar, glucose, fructose, and also their structure in open form and their structure in closed ring form. ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में. So this was the entire discussion. So next lecture जो होगा वो पूरे structure पे based होगा. Very very important guys. Till then, take care guys. Bye.